these systems, they are very much related to an extent. So you can correlate with that part also. So this presentation, what I have decided, I have actually structured it in two parts. In part one, I will talk about selecting journals, and in the second part, I will be talking about writing for those journals, how to write it. And whatever I will be sharing with you, this is based on my experience. And in this journey, actually, I have gone through lots of rejections and everything. Everybody goes, and these rejections actually given me that understanding how to proceed. And if time permits, I will show you one of the review also in the process. What types of comments are coming, how to tackle these reviews and everything. I will try to go for that also, so that you will able to understand what exactly these academic writings and everything are. Because I believe those who are doing PhD for you, it is a must. Those who are in teaching, for them also it is a must. And those who are in PG, some of you might be planning for PhD. And if not, those who are joining in research domain, for them also it is going to be vital. So considering all these things, so let me start this journey. So yeah, so this is the two parts that I was talking about. First one is on selecting quality journals. Now, just remember, when we are talking about quality journals, every journal claim about themselves as quality. And the quality has its own connotations. I agree on that part also. But always remember two, three things. When I am talking about a journal publication, actually its publication is the latter part. The first part is scientific research. It is the outcome of that research that is going to be published. So whenever you are talking about a quality journal, you remember any journal that is not following a scientific temperament, any journal that is not going for any rigorous process of screening your article, or any journal that is not following some specific scientific mechanisms, that is not a quality journal. That is not a quality journal. So that's why I have given just a simple definition for this. A quality journal is a scholarly publication medium that adheres to rigorous academic standard of your field, and publishes original and scientific outcomes. Remember this word, scientific. Now, when I am using the term science, science is going to be differentiated from perspectives and other points multiple ways. Politicians can say lots of things. That is politicians' opinion. That is not science. Science tells something in some valid data, some backup, some other data which is going to collide all these things. And based on that, actually science communicates and concludes. So when I am talking about this, this is science, scientific outcomes. And it is widely recognized in its field. That is very important criteria you always remember. So you are thinking or planning for publishing something, some of your outcomes. Just ask those people who are working in your domain, and what may be the journal I can think about. You will find 4 or 5 journals and they are frequently telling. Now, what does this mean? This means those journals, by all these temperaments and all this rigorous process, they've established their name in that domain. And that's why people are actually talking about them. You might be heard about IEEE in your context, in IT and all. And IEEE, not, I should say all journals are very good. But yes, definitely there are some journals who just taken their shapes and they are the journals. And you teachers and others are definitely going to tell that. Like this, in our domain also, there are lots of journals which we dream, so that we can go with one of our tracking outcomes on that journals. So few criteria I have just mentioned, which might be the parameters to confirm the quality of a particular journal. I will describe them gradually in later point of time. We'll find rigor in peer review process, editorial board of the journal, the impact factor of the journal, subject scope and relevance, then time to publication, very important part. हम लोगों के पास वक्त नहीं होता है, 1 महीने में पब्लिश करना है, 15 दिन में पब्लिश करना है, जितना ज्यादा उसमें जाओ तो उतना ज्यादा रद्दी में फंसोगे. It's very clear-cut communication from my side. Because if you are talking about quality publication, quality journal, consider this, it will take at least 1 year in the complete process. Minimum 9 months to 1 year in the complete process.
When I'm using the complete process, I am talking about from submission to outcome. Complete process. Maybe it can take 2, 3, 4 reviews in the process also. So indexing and abstracting, ethical guidelines, open access policy, transparency. I'll discuss them gradually, but these are some of the points that you need to assess whenever you are thinking for a journal. You are trying to find out a good journal for your publication output. Because remember, it is the hard work of youths for these 3 years that you are going to publish. It is not anybody else's work, or it is not anything which you got free of cost. It is your hard work. इसी के लिए तुमने एनरोलमेंट किया है, सुबह 9 बजे आ जाते हो, शाम को 4, 5, 6, 7 बजे तक डिपार्टमेंट में रहते हो, कभी खाना होता है, कभी नहीं होता है, यहाँ पे जाना पड़ता है, वहां पे जाना पड़ता है, लैब में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, और उसके बाद जो मिलता है उसको तुम देने के लिए सोच रहे हो, तो फिर ये शायद अपने बच्चे से कहीं हिसाब से कम नहीं है. It's just like your baby, so be careful about that. Now, so why to publish? That's the thing I just try to highlight. That why to select quality journals? बहुत सारे journals है, आज तो दोगे तो 4-5 दिन में publish हो जाएगा, बहुत सारे हैं, और बहुत सारे journals भी है जो आपसे बोलेगा कि आप ही पैसा पे कर दो, 5 दिन के बाद आ जाएगा. The world is now running in a predatory way. In fact, you will be amazed. Lots of good quality indexing agencies, including Scopus, have predatory journals within it. उसके अंदर भी है, Scopus में भी predatory journal available है. बहुत पहले से मतलब इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटिंग मैनेजमेंट मैथमेटिक्स सोशल साइंस ये सब कुछ भरा भरा हुआ है, लेकिन फिर स्कोपस में लिस्टेड है. So these are also the cases, and these cases we people, we as a scholar, we as an academician need to avoid. And that's the area actually where lots of us actually creating or not able to understand, and it is creating impact on us, especially when we are trying to publish our paper. We are thinking for our research outcomes to be published. So these are the issues that we need to understand and we need to avoid, because we are not in a rat race to publish hundreds, 200s, 300s. No, any good scientific research acumen, a good researcher is not strive for quantity. It's I believe strongly, and I suggest this to everyone. Any good researcher, good academician does not strive for quantity. It's quality, and quality times that cost at time, and time is also very much cost. Remember that. So these are some of the points which I have tried to highlight. Why should go for this kind of journals? Because it is a contribution in your field. If it is engineering field, electrical, computer, whatsoever you are working on, IT, whatsoever working, you are contributing something. You are advancing the knowledge base of that field. So it's a lots of responsibility on your shoulder, because some days after this publication, the same thing is going to be taught by others in their classes. So those who are the BTech, MTech students, to those teachers are going to teach this. Now think, if you are coming up with some garbages, and these garbages are being taught, what you are doing for the future generation. And this way, science cannot prosper, knowledge cannot prosper. So that's why contribution to the field, then obviously academic recognition, then your career advancement. If you follow our career system, the way uses is planning for recruitment and everything everywhere, research plays a big deal. Then your networking opportunities, and it's a big issue. You will find whenever you are coming up with some good outcomes published in good journals, you are going to be network with so many established personalities in your domain, and these people are working with you, talking with you, they are contributing also in your journey. This is altogether a different world whenever you are coming up with this kind of articles. And so, and access better funding and resources. Lots of funding agencies are there. Prior sanctioning fund, prior sanctioning a project, they try to find out what types of credentials you have in the form of publications. They check for it. So this is also another issue. And obviously avoiding predatory journals, that I will be talking at the later point of time. Now I am talking about this, how to select.
I have identified 5 particular parameters or 5 particular areas, issues that you need to understand. First one, indexing, ranking, metrics. Second one, reputation and the publisher credential. Third one, how you can actually identify this kind of suitable journals for your research communication. And then within journal, how you are going to evaluate the journal quality. The fourth one. Because as I told you, in Scopus also lots of creator journals are there. Scopus is gradually removing them. Even in Web of Science also that is there. Because if you follow in the process, I will tell that whenever we are using indexing, we will be talking about either Scopus or in Web of Science. Maybe in Web of Science, Science Citation Index, Gaussian Citation Index, Emerging Sources Citation Index, Science Citation Index Expanded, or Humanities and Citations Index. So these are the issues that is there. And tools and resources for journal selection. There are some tools also with which you can identify some of the good journals. So these are the 5 areas in which I decided to come up with selecting quality journals or how to go for the journals to classify this. So first coming to this journal indexing and ranking part. Now, these are the prominent ranking we try to follow. Quality databases, mostly Scopus and Web of Science. Now, if you try to go with Scopus, Scopus try to, first of all, Scopus gives site score. It is not impact factor, it is site score. And there is a difference between site score and impact factor. For example, in our recruitment, promotions, in UGC system, UGC talks about impact factor, not site score. Impact factor is given by Web of Science, not that that is Clarivate, but not Scopus. Remember that. What Scopus gives? Based on site score, Scopus gives journal ranking in quartiles. Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 journals are considered at the top 25 percentile journals. Q2 are next 25, Q3 are next, Q4 are the next. Now, this is one of the criteria that you can go with. Second is ranked by top academic bodies. I will talk about that also. ABDC is very much important in our part. This is called Australian Business Dean Council. So majority of the business institutions in Australia and Australian domains, they follow ABDC ranking. Now ABDC every 4 years comes up with a huge body of established scholars that sit with all those journals in that domain and rank them. And they rank them as A star, A, B, C. So A star is the highest quality, A is the next, B is the next, C is the next. Then your ABS. ABS is actually AJG. It's given by CABS, Chartered Association of Business Schools in our line. And that gives academic journal guide or AJG. Now, their ranking, it is ABS or AJG is mostly accepted in US system. In US system, they categorize journal into levels of ABS, ABS 1, 2, 3, 4, and 4 star. 4 star are the top journals, and from your domain, you will find hardly 4 to 5 number of journals which are in 4 star, and another 3 to 4 number of journals in 4. Even in our context, also the same. If we try to find out in AJG 4 star, in our marketing, we have only 5 journals. In 4, we have only 2 journals. So this is the case. Now, another one is there which is called FT50. FT50 is more important for our part, but one or two technological journals are also there. FT50 is given by Financial Times. So Financial Times publishes their list of top 50 journals across the globe. And these journals are actually considered mother journal of all. And most of the top institutions offering technology or management, they go with FT50 list. And you will be amazed to know in India also you will find hardly 20 to 30 number of authors who actually publishes in FT50 till now. This is the condition of FT50. And these are the all gem journals which are there in FT50. Then your H index, impact factors. Impact factor is obviously given by your Clarivate or Web of Science. Now,
when we are talking about impact factors, for that this is not any ranking. The first three, whatever I have told, that is Scopus, then your ABDC and all those things, and then your these are actually accrediting bodies. These bodies categorize or rank the journals, and this impact factor is actually based on citations. Site score is also based on citations. So whatever paper has been published, say 2 years back, in one of the volume of a particular journal, and the coming 2 years or in the 2 years, whatever citations that has actually achieved, dividing one by another decides the impact factor of that journal. So remember here, journal impact factor does not mean your article's impact factor. Still, when the impact factor of the journal is good, it automatically says there is a high possibility for your article also, your scientific outcome also, to be shared and to be disseminated in a large scale among the scientific community. So that's why impact factor is important. And I have simply mentioned one very interesting thing here. Use rapid journal quality check extension in Google Scholar. You know what is the beauty of this? I'm just showing this to you for your understanding. Just fine. It will able to understand you why to use this. I have already installed this rapid journal quality check in my one because I check it every day. Now suppose I am writing Google Scholar. Google Scholar. Now suppose in Google Scholar, I am searching one of the term of my domain or your domain, say metaverse. Now just look. Getting too slow. Yeah, some of still evident. Now look. So for example, a survey on metaverse, fundamental security and privacy mentioned is Q1. Means the journal where this article is being published, the journal is in Scopus Q1. Fine. Then just as I'm going for letter, just find Q1 backed by C. C means ABDC C. ABDC is given in this way. So this journal is Q1 journal, but in ABDC ranking it is in C. Fine. Now if I suppose I am just clicking here in this plus, now that's fine. Where it is mentioned or published, everything is given. Where it is indexed, where it is not indexed. So scientific journal rating, it is Q1. Then VHP, it's not there. Core, it's not there. CCF, it's not there. Academic journal type, it's not there. ABDC, it's not there. FT50, it's not there. So this is the ranking of this journal. So whenever you are going for your articles, and even this is not only for checking publication. Why actually I'm showing this to you? The reason is this is one of the important aspects for your literature review. Remember that. All of you who will be doing your PhD, always remember there is a very important aspect in our research, which is GIGO, garbage in, garbage out. जो सोर्स लेकर तुम अपना लिटरेचर रिव्यू करोगे, जो सोर्स को अपने तुम अपना बेस बनाओगे, जिससे तुम अपने जर्नी को, अपनी लॉजिक को एस्टेब्लिश कर रहे हो, वो खुद अगर क्वेश्चन मार्क है, तो फिर तुम्हारा वाला जो आएगा वो क्या होगा? Just try to understand that. So this means there comes a question: what types of journal or what types of articles I am going to consider for writing my assertion, for writing my logic, for writing my paper? What types of literature should I take? And this is going to be one of the very brilliant source. Whenever you are going, suppose you are working on artificial intelligence, you are working on, say, augmented reality, virtual reality, or metaverse, or whatever areas you are working. And first and very foremost thing you are doing is you are going for a literature review. So SLR भी आजकल एक पैटर्न हो गया, systematic literature review या bibliometric analysis या meta analysis, ये सब भी एक पैटर्न हो गया है. तो जब भी तुम वो कर रहे हो, तो ये जो काम होता है वो तुम्हें अपनी लिटरेचर के लिए भी मदद करता है. It helps you for your literature searching also.
So when you will have this ranking with you, you will able to understand which literature I should consider for my base, which articles I study more, so that this can give me some very good ideas. And more importantly, remember, the more this kind of quality journals you will read, the more will be your understanding on research gap, the more will be your understanding on future research directions. Because the research directions they offer, these are simply phenomenon because they are writing, thinking for advancing that domain, thinking for advancing that literature space. They are not writing for the sake of writing. So that's why always remember, whenever you are going for your literature review, try to follow this parameter. Uh, So this journal quality check or rapid journal quality check is going to help you in two ways. One, in your journey of PhD, what types of articles you will consider, what types of article you will use for articulating your hypothesis or whatever or whatsoever you are doing, even how to design your experiment. That also this kind of journal articles will be a base. Then second thing is where you should submit your findings or your research. In both these two areas, this journal guide is going to help you significantly because this is going to tell you what are the multiple listing for these journals available. Find this? Okay. Up to this much, any questions, anybody? किसी के मन में कोई सवाल है कुछ है? अगर नहीं है, तो let me go to this presentation again. So, use rapid journal quality check extension in Google Scholar. These are some of the checkpoints you need to follow in your academic journey, in your research journey, whenever you are thinking for selecting a journal for writing your own as well as submitting whatever you have written. These are the two things you remember. The first part on journal indexing, ranking, and metrics. I am not, you just follow. I have not even more emphasized on impact factor or H index. There are reasons. Now, when I am talking about H index is total number of articles you published and highest cited number backed by total numbers. Say you have 10 publications having more than 10 as citations. So that will be your H index. Now, I am not talking about H index because nowadays there are lots of editor services that can sell you 10,000 citations for a year at a cost of 10,000 rupees. So increasing citation is not anything too much rocket science, because nowadays everything is being commercialized, and we are in academia. We are not in a commercial business to increase our citations. And you will find that Stanford comes up with top 2% scientist list. I can bet from that list you can at least identify 20 to 25% of the scholars who are fake scholars. Fake scholars in the sense that they have inflated their citations, and this inflation is actually taking some services. So that's why I have not much emphasized on those impact factor or H index. The reason is these are based on the outcome, whatever you have published and how much citations you got for that. And citation is the outcome of your good publication. It is important. I agree with this. This is very much important, but not as much whatever I have given emphasis on the prior one, because the prior rankings and others are still in the hand of the academia. Now, in the Australian community or in the UK community or in the US academic community, these determined journals are going to decide whether a person will be given promotion or not. Then you understand what types of integrity they will maintain for selecting a journal in this list. So that's why I have given more prominence there. Because then I can give you a very good example. Say, there are some journals which are specialized in sensor works. Now, it is such a niche area that few number of people works there. So getting a 10 impact factor in that area is actually a dead dream. Maybe a journal having an impact factor of say 1 or 1.5 is exceedingly well in that domain. On the contrary, if you think about say environmental journals,
Because that way people are starting now publishing on environments. An environmental journal is taking an impact factor of say 50, it is nothing to be astonished about. So that's why impact factor comes later. I'm not more worried about or not highlighting on that impact factor part. But what I'm highlighting more is on that list. Try to hit journals which are on those lists. That is very, very important. Now, second thing that you should try to understand while journal selections. Now remember here, this journal selection is not to only submit your papers. It's also for your literature survey. Because your thesis, your PhD is going to be backed by your literature review only. Type of literature you review, type of quality literature you study, that determines how much sound will be your contribution or your PhD. Now, if somebody is planning for a PhD just for the sake of a doctorate, for them it is separate issue. I'm not going to, my lecture is not also for them. Honestly, I'm telling you. My lecture is only for those, if there are 2% also, I'm happy. Only for those who sincerely want to do something good in their research. And if somebody gets something from there, I will be happiest, obviously. So, now second thing is reputation and publisher credential. क्योंकि मैंने बोला था बहुत सारे ऐसे जर्नल भी है जो स्कोपस में लिस्टेड है, वेब ऑफ साइंस ऑफ एक्शन, लेकिन फिर भी प्रेडेटरी है, फेक है. तो उससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? Here comes the second part. Reputation and publisher credentials. So I've just shown you two things. First one is a good publisher. Now suppose I'm just giving without due with due regard to all those publishers. Suppose in one side there is Indus Science, there is Content, and another side there is Elsevier, or there is your Sage, or say Wiley. Obviously, the risk at stake for Wiley in publishing your fake articles is much more compared to where is Content or where is Indus Science. That means the name Wiley, the name Singer, Sage, Taylor and Francis, Elsevier is IEEE is going to give us initial round of dependability that the journal they are coming up with that will not be at least that much fake. I'm not still telling it is excellent. I'm saying that much fake. This much reputations they can give means I can go for next check. So just try to understand here. First, I talked about those ranking bodies and ranking. Second, I am talking about the name of the publisher. Which both these two. Now, another important thing I have mentioned here is that the sites which are talking about exposing fake articles, exposing fake literature review, fake analysis, as well as fake, you can say, images and so, and then communicating with the publisher to retract the article. So there is one retraction watch. There is another IRW, Indian Research Watchdog. There are lots of others. Now try to look about these sites frequently. For example, very soon in this year itself, in previous 2 months, IEEE retracted 320 articles. And all of them are, mostly all of them are actually special issues because of compromising qualities. Same is happening with Springer. Same is happening with Elsevier also. One of the prominent journal of our line, it's on logistics and supply chain, they retracted 25 articles of one particular special issue, where we have some established scholars also in that retracted list. So that's why try to go for these websites so that you can get a glimpse on what types of articles are retracted, from which journal they are coming. Very soon you will find another one or two journals in that list.
One is there very prominent scientific reports. It's published lots of articles. Very soon you will find scientific reports. Perhaps will be in the retraction list. So there are lots of journals out there that are going to be in this, and when you will check, you will able to know. Then your cross-ref. Cross-ref is another thing which you can check for whether the journals supports that. Then what this will do is, this will help you to differentiate yourself or to take a look where you can avoid the predatory journals. Where you can avoid those predatory journals, and you can at least come up with journals which try to maintain quality and scientific rigor. That's why I told at the beginning, if you are going to recall, that if you are really striving for research, you are really striving for doing something serious, you don't think that in 2 months or 3 months my article will be published. If I got time, I will show you one article recently got published. It took 2 years with 3 rounds of reviews, and what types of review it was and how the article changed. When the first one is there, last one is there. So this is the publication credentials. Now, if you are targeting those kind of journals, remember in those journals, text rejection comes in the tune of more than 85%. You will find those journals mentions acceptance rate 7%, 8%, 10%, 12%, 30%. That's less than 15%. Now, if you try to understand, in a year, if a journal is getting 3,000 articles, they are actually accepting 15% or 10% of 3,000, means 300 maximum. Means, if you consider this 300, this means maximum 500 articles are going in review. Because reviewing is a voluntary activity. Reviewers are not get paid. That means you cannot burden a reviewer by giving more and more reviews. Next time that person will not do. So maximum 500 is going to be considered. So 3,000 में से 500 सिलेक्ट होगा, मतलब 2,500 को स्टार्टिंग में वो लोग डेस्कटॉप में या फिर उनका जो इनिशियल एडिटर है वो टेक्स्ट रिजेक्ट करते हैं. So that's why I told, even the articles I was talking, we got 3 rounds of text rejection, 2 rounds of review rejection. After that, it got accepted. So it happens. And when everything goes through in this way, you cannot anticipate a paper to be published in 2 months or 3 months. It's not possible. Average review time goes with 1.5 months. It's given after the extension another 1 month. And then after all this process, if this kind of 2-3 rounds of review is there, review time itself is your 4 months, 5 months. There are other processes there. So you can anticipate that it will be at least 9 months to 1 year if you are thinking for some good articles in some good journals. So that's why if you are thinking for, please don't think about shortcut. If you are thinking for shortcut publications, my suggestion to all of you is please leave publication journey and go for something else. Okay, so scope and aims of journal vis-a-vis your research. तो ये सबसे पहला चीज है, अगर तुम पहली वाला जो मैंने बोला, इम्पैक्ट फैक्टर देखा है, जर्नल रैंकिंग देखा है, सब कुछ देखते हुए मैंने 5 से 8 10 जर्नल को सेलेक्ट किया. अब तुम्हें देखना है उस जर्नल के अंदर जितना भी अच्छा जर्नल होगा, वो जर्नल अपनी स्कोप, अपनी एम सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ रहता है. इवन कभी कभी तो एडिटर इन चीफ लिख देता है कि कमिंग 1 ईयर हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसी टॉपिक के ऊपर कोई आर्टिकल आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं या फिर उसको हम कोशिश करने वाले हैं कि हम उसको फर्दर देख पाए. मतलब very beginning this specific and categorically says that what types of articles are welcome in my journal. उसके पीछे वजह है क्योंकि जो भी एडिटर, एसोसिएट एडिटर या एडिटर इन चीफ बनेगा उसका भी एक पर्टिकुलर नॉलेज डोमेन है. आज अगर मुझे मार्केटिंग आता है, मुझे कोई अगर मेडिसिन का कोई पेपर भेज देगा, मैं उसको अगर क्या करूंगा? What type of justice I can do? That means if my editorial board of the journal is from this kind of credentials, I will seek this kind of papers. That's why these journals categorically says the aim and scope of the journals. And the second thing you should check about is who are the audience and what is the relationship of the journal vis-a-vis your research area. ये matchability होता है कि नहीं होता है.
इसको कोशिश करो, चेक करके फिर तुम्हारे आर्टिकल्स को तो सबमिट करो। अगर वो नहीं करोगे तो फिर 2 महीना 1.5 महीना वो रह जाएगा सिस्टम में, उस पर ये डेप्ट रिजेक्ट हो जाएगा। मीन्स यू आर गोइंग टू स्पॉइल 2 of your crucial months in the process. Don't do it. Time is money. Time is value. So that's why try to check that part. Now, after that, what you should check? Peer review process, whether it is clearly communicated or not. ये peer review कैसे होता है? In fact, अच्छे चैनल जो होता है वो सबमिट करने के बाद अगर peer review में चला जाता है तो फिर तुम्हें डेडिकेटेड लिंक भेज देता है। उस लिंक पे कभी भी तुम जो अगर क्लिक करोगे तुम देख पाओगे अभी कौन से स्टेज पे है तुम्हारी पेपर, अंडर रिव्यू, awaiting editorial assistance, awaiting this recommendation, वो कौन से स्टेज में सब कुछ दिखेगा। तो जो एकेडमिक राइटिंग्स होता है उसमें एक स्टैंडर्ड पीयर रिव्यू होता है, वेरिएशन हो सकता है लेकिन एक स्टैंडर्ड पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है। तुमने सबमिट किया, एडिटर के पास किया, अगर ज्यादा हो गया तो फिर एडिटर शायद एसोसिएट एडिटर या किसी और को इसको असाइन किया, उन्होंने देखा, लेकिन उनको अगर लगा कि हाँ उसमें कुछ पोटेंशियल है, उसको ज्यादा किया जा सकता है, तो फिर वो उसको रिव्यू में भेजेगा। अगर नहीं तो वहां से वो डेप्ट रिजेक्ट करेगा। अगर रिव्यू में भेजेगा तो फिर रिव्यूअर के पास जाएगा, डबल लाइन रिव्यू हुआ तो 200 ज्यादा रिव्यूअर जाएगा, वो दोनों रिव्यूअर उसको असेस करेगा, उसके लिए उनको 1.5 से 2 महीने या 2.5 महीने दिया जाएगा, वो भेजेगा। फिर एसोसिएट एडिटर जो असाइन किया गया वो भी देखेगा, तीनों का कमेंट एक साथ आएगा, वो एडिटर इन चीफ के पास जाएगा। एडिटर इन चीफ उसके वजह से डिसीजन देगा, अगर वो मैनिपुलेशन हुआ तो तुम्हें रिवीजन करने के लिए कहा जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर ऑकवर्ड है तो फिर वो रिजेक्ट बोल देगा। So this is the process, the standard process, and every good journal clearly mentions this process. So you check for the process. Second thing is editorial board. Editorial board is very transparent in those kind of journals. एक पूरा हायरार्की होता है, कौन सी पोजीशन में कौन है, क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, सब कुछ दिया हुआ रहता है, और वो भी इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी, दैट इज नॉट जीमेल और याहू मेल, रिमेंबर दैट, बिकॉज दिस क्रिएट्स ऑथेंटिसिटी। तो ये क्लियरली मेंशन होता है। थर्ड इज एक्सेप्टेंस रेट, पहले चेक कर लेना उस जर्नल की एक्सेप्टेंस रेट कितनी है। अगर 15% से नीचे है तो फिर सोचो उसके बारे में, अगर 15% से ऊपर है मत सोचो, या 20% से ऊपर है मत सोचो। शॉर्टकट के लिए सोच सकते हो, अलग बात है, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर मत सोचो। एंड दैट इज स्कोप मेंबर, स्कोप मींस कमिटी ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स। तो वो जर्नल उस कमिटी ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स का मेंबरशिप में है कि नहीं है वो भी चेक कर लेना, क्योंकि आजकल एथिकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर तुम्हारी जो एक्सपेरिमेंट या कुछ तुम कर रहे हो वो अगर इंस्टीट्यूशनल एथिकल बॉडी से अप्रूव्ड नहीं है तो फिर बहुत सारे जर्नल उसको स्ट्रेट और आउटराइट रिजेक्ट कर देता है। Have you taken permission from your institutional ethical committee? If you have taken the permission for this work, if it is involving any human being or other lively being, what is the ethics approval number? वो तुम्हें सबमिट करना पड़ता है। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर स्ट्रेट वो लोग रिजेक्ट कर देता है, तो फिर वो भी इंश्योर कर लेना। तो कुछ टूल्स भी है जिससे तुम उसको फाइंड कर सकते हो। सो आई ट्राई टू फाइंड आउट दैट जर्नल फाइंडर टूल्स। अब एल्सेवियर में जाकर तुम सर्च करते हो वो देता है, लेकिन पहले जो हमने लिखा है एल्सेवियर, स्ट्रिंजर, IEEE, वाइली, सेज, टेलर एंड फ्रांसिस, वो लोग अपनी पर्टिकुलर क्षेत्र में देता है। मैं जो छपाता हूँ या मैं जो पब्लिश करता हूँ जर्नल, उनमें से क्या क्या इस लाइन के साथ मैच करता है, वो इतना देता है। लेकिन अगर तुम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी डेटाबेस पे जाओगे या वेब ऑफ साइंस में जाओगे तो हॉलिस्टिक मिल जाएगा, फिर स्कोपस में जाओगे वहां पे हॉलिस्टिक मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज मैं प्रेफर करता हूँ, ट्राई टू गो विद प्रोफेशनल नेटवर्क्स, try to go with your colleagues, experts, recommendations, and for your case, try to go with teachers. Your teachers are in a very good condition to know what types of journals are really good because they are going through this process throughout. So, and also with one caution I would like to say to all, be careful about choosing your teacher also. I'm honestly telling you, be careful about choosing your teacher, at least for taking solution with journal. It's a general comment I'm giving to all of you. I have also faced this, so you should go with that. So this completes our first part on selecting a journal. How you should select a journal for your literature review,
for your study, for submitting a paper, and so. Any questions, anything up to this much to anybody's mind, you can ask me. कोई सवाल या कुछ है किसी का मतलब यहाँ तक? So no questions are there. So I guess everything understood or all clear? कुछ भी हो सकता है. Second all clear can be also all clear. So वो clear भी हो सकता है. Means erased. Erased भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. लेकिन remember that this is very very important. Yeah. Rupak Chakravarti has raised a hand. Yeah. So can this visible? I think. Yeah. You can ask the question. Sir, I will later ask you. Yeah, you can ask the question now. Sir, later I will ask you. Yeah, else one thing you can do, can you write in the chat box? Okay, now you can ask. Rupak, you can ask now. Okay, so if it comes fine, otherwise let us start or move on the second part. So in the first part, I try to give you a glimpse about journals. Believe me, the more days are coming, the more this selection of journal is going to be complex. Because everybody is trying to find out some commercialization. And you will be amazed to know that this commercialization front is more in India, in China, in Iran, and those belt. Saudi Arabia, Iran, that belt is gaining this like anything. And it is in this area, it is India, China, they are gaining like anything. Those dietary ends are more in India and China in this segment, in the publication business. So be careful whenever you are looking at journals and all and selecting that one question. Can you just type this? Sit down, Kritika Devi. Yeah. How to find a first publishing journal? Madam, for you, I don't have any particular answer. I am sorry for that. I cannot tell you how to find first publishing journals, but I can tell you every good journal offers statistics in their website. Then submission to first decision, how many days? Submission to complete acceptance, how many days? Then this way they try to offer some of the statistics, and you can go with those statistics. But how to find it first, I cannot say. Appropriate way to find a journal in a particular field. Suppose Rupak, yeah, I can see you. So I guess you are from management. Rupak, yeah. So if you are from management, how to identify particular journal in management field? I talked about that already. First, try to go with those ABTC or ABS or FT50. From there, identify those management journals. Then go to your Scopus and Web of Science and confirm that journal there, and then proceed with your areas of study in that area. Fine. And in that part, your rapid journal quality check can help you in a big way. Okay, so with this, let me now move to the second part of this business deliberations, where I try to highlight about writing for quality journal publications. Now, believe me, it's writing for a quality journal publication itself is a workshop of 7 days. If you are trying to teach someone how to write for those journals, but I will try to give you a glimpse for all these things so that you can go through with this fact. Now, I have tried to highlight another 5-6 points here when you are thinking for writing for a good journal. First one, understanding the journal guidelines. Second one, how you are going to structure your manuscript. Almost in all areas, the structure is same.
That's why I thought let us come up with a common structure. Then best practices in academic writing. What are the best practices you should follow? Then common pitfalls to avoid, or what are the things you need to avoid? Then you're preparing for your submission. This is also a very timid task and very careful task. And addressing revisions. How to address revision. Now, one thing I can tell you that till now, whatever I have done, I find nearly 90% of success in my revision phase. Once revision has come, it's seldom I got rejection after that. There are reasons, and even I know some of my scholars or some of my colleagues also who are getting more than 50-60% rejection after revision. That is also happening. So that's why I have told it. This revision is also an art. How to do it? That is very important. So first one is understanding journal guidelines. I simply write one line. Please go through the journal website. Any good journal in their websites give them the directions how to write or how to format, what should be the font size, what types of writing, Word or latex or Word, what, then how to arrange your figures, how to arrange your tables, how to arrange your, what is the word count, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, what is the referencing style, APA, MLA, Oxford, whatsoever is there, or freestyle. So whatsoever is there, everything is in clearly, whether graphical abstract is required or not, if you are sending files, whether it is in JPG or TRF or whatsoever format you are thinking for, everything is categorically mentioned there. So that's why I simply mentioned this journal guideline is very important. Actually, अगर तुम सोचो कि ये गाइडलाइंस क्यों देते हैं वो लोग, क्योंकि ये गाइडलाइन के हिसाब से वो लोग अपने सिस्टम को स्ट्रक्चर कर लेते हैं. They structure their systems in that guidelines. क्योंकि अगर वो भी अपने आप को ऑटोमेटाइज नहीं कर पाएगा तो इतने सारे राइटिंग्स को वो कैसे प्रोसेस कर पाएगा? प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा. प्रोसेसिंग टाइम अगर ज्यादा हुआ तो फिर जो ऑथर से उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, या बिजनेस अगर जो पब्लिशर बिजनेस करते हैं उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है. इसलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टाइल फॉलो करके पूरा टेम्पलेट को उसी हिसाब से वो लोग प्रोसेस कर लेते हैं. अगर तुम उसी प्रोसेस में नहीं लिखोगे तो वो तुम्हारे पेपर को कंसिडर नहीं करेगा, ताकि वक्त बचा जा सके. So for that, go to the journal and try to check for the instructions that is given in the journal, and please go by those instructions. Don't underestimate them and say that चलो इसको नहीं मानते तो फिर कुछ नहीं होगा. कोई भी अच्छा जर्नल है इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर फिर स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर देगा. इवन मौका भी नहीं देगा कि उसको सही करके भेजो, वो भी नहीं बोलता, स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर देता है. So try to go through that part. Now, structuring a manuscript. This is one of the very important parts. And all of you, those particularly doing PhD and in the process of your this journey of academic thing, please remember this. This is structure. Whatever I have given here, this is a structure which almost all stream, all discipline follows. हर डिसिप्लिन में लगभग यही होता है. थोड़ा बहुत इससे दूसरा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही रहता है. पहले तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट आता है, फिर कीवर्ड्स आती है, उसके बाद पेपर में तुम चले जाते हो. कभी अभी कुछ जर्नल जेईएल क्लासिफिकेशन भी मांगता है, हर कहीं जरूरत नहीं है. उसके बाद इंट्रोडक्शन, अंदर जो आता है इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन, उसके बाद पेपर एनालिसिस. ये लगभग जर्नल फॉलो करता है. लेकिन मेरे सजेशन सबके लिए ऐसा रहता है जो पेपर राइटिंग के लिए चाहते हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को बिल्कुल मत लिखो. डोंट राइट इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग. ये मेरा सजेशन है सबके लिए. मैं भी वही फॉलो करने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में तुम नहीं डिस्कस करोगे. लिखने से पहले तुम्हारी आइडिया को लेकर कम से कम 3 से 4 महीने वक्त बिताओ. स्टेज में मत सोचो कि मुझे डाटा कलेक्शन करना है और एनालिसिस में जाना है. बिल्कुल नहीं. 3-4 महीने उस आइडिया को लेकर बिताओ. जितना ज्यादा लोगों से उस डोमेन का है उनसे बात करने की कोशिश करो कि इस एरिया में मैं काम कर रहा हूं, ऐसा काम सोच रहा हूं, इसमें नोवेलिटी क्या आ सकता है.
सही में ये काम करने की जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि जब मैं ये बात कह रहा हूं कि रिसर्च फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वेदर इट इज जस्टिफाइड टू कैरी आउट, सही में क्या वो करना जरूरी है। सो इसलिए कोई भी आइडिया अगर दिमाग में आता है, एनी रिसर्च स्टार्ट्स विद ए वेरी गुड आइडिया, और जो आइडिया जिसका कुछ वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, वो सोसाइटी भी फेस कर सकता है, वो बिजनेस भी फेस कर सकता है, वो बहुत सारे एरियाज में भी फेस कर सकता है। जैसे हम लोग जब करते तो हम लोग एक बात अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपनी कम्युनिटी में हमेशा बोलते रहते हैं कि ऑब्जर्व करो। The fundamental and strongest tool for idea in research is observation. इनफैक्ट तो हम लोग सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं, तो फिर हम लोग जब मछली बाजार में जाते हैं, सब्जी बाजार में जाते हैं, वहां पे भी ऑब्जर्व करते हैं ये मछली बेचने वाला किसी को सार क्यों कहता है या किसी को ऐसे तू तरक करके क्यों बोलता है। कोई आता है तो फिर कैसे उसको समझ लेता है कि कीमत बढ़ाना है, कोई आता है तो नहीं समझ लेता है कि कीमत नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग वो साइकोलॉजिकल लेकर डील करते हैं, तो फिर हम वो भी ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन तुम्हारी इस फील्ड में भी ऑब्जर्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी फील्ड, ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर रिसर्च आइडिया। ऑब्जर्व करके, क्योंकि देखो दुनिया हम लोगों के दिमाग में एक वे में बैठा है कि दुनिया ऐसे चलता है, सडनली अगर कोई चीज वहां से डेविएट होता है तो फिर तुम्हें कहा हाँ ये तो कुछ अलग है। फिर अगर उसी अलग चीजों को लेकर तुम 4-5 एरिया में सोचोगे कि ये अलग क्या सिर्फ एक ही के लिए था, क्योंकि एक ही के लिए था, तो दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन। जैसे मेटल इज सॉलिड, बट इफ यू गो फॉर हाइड्रोजन इट्स नॉट सॉलिड, सारा सॉलिड नहीं होता, तो ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन ज्यादातर मेटल्स वही सॉलिड ही होता है, तो इसी वे में एक दो में देख रहे हो तो फिर ये शायद एक्सेप्शन है। लेकिन अगर वही चीज तुम 8, 10, 15, 20, 25 लोगों में नोटिस कर रहे हो, मतलब इसमें तो कुछ है। दिस इज बियॉन्ड योर, इसको हम कहते हैं एक्चुअली चांस वेरिएंस। प्रोबेबिलिटी में अगर जाते हो जिसमें तुम 0.05, 0.95 लेकर बातें करते हो, वही पे आता है चांस वेरिएंस। तो फिर ये चांस वेरिएंस नहीं है, ये उससे कुछ ज्यादा है, तो फिर उसमें शायद मुझे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। दिस इज द क्लू दैट यू आर गोइंग टू गेट। उसके बाद वो क्लू को लेकर अपनी एरिया में, जो अपनी एरिया मीन्स अपने डोमेन में जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो लोग इस एरिया में काम करते हैं, उनसे बात करो कि ऐसा ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ऐसा क्यों हो सकता है। फिर इस टाइप के जर्नल में जाओ, जाके उसको सर्च करो, उन्होंने क्या कुछ इस टाइप के काम किया है या किसी ने कुछ बोला है, देखो अभी तक क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लोग क्या कह रहा है, वहीं से तुम्हें मालूम चल जाएगा इस टाइप के कोई आइडिया को लेकर पहले साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज द पॉइंट दैट क्रिएट्स योर रिसर्च गैप। जो सबसे बड़ी बुन है जहां से तुम्हारी रिसर्च की ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे मेथोडोलॉजी सब कुछ शेप होगा, लेकिन वो सबसे पहली चीज होता है। जब ये आ जाएगा तो फिर तुम्हें ये सोचना जरूरी है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ इसमें काम किया जा सकता है, तो फिर और एक सवाल भी तुम्हें साथ ही साथ पूछना पड़ेगा कि सही में करना जरूरी है कि नहीं है। अब किया जा सकता है और सही में करना जरूरी है, दोनों में फर्क होता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ये सब कुछ करना क्या जरूरी होता है क्या? खाना ऐसे भी खाया जा सकता है, सिर्फ घुमा के भी खाया जा सकता है, घुमा के खाना की जरूरत होता है? नहीं होता। तो फिर किया जा सकता है और सही में करना जरूरी है, दोनों में बहुत फर्क होता है। सही में करना जरूरी है इज योर कंट्रीब्यूटरी वैल्यू, एंड एनी साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्स इट्स कंट्रीब्यूटरी वैल्यू। क्यों करोगे? क्योंकि इसके पीछे लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हुआ है। कोई फंडर तुम्हें फंड देगा, कोई कंपनी तुम्हें फंड देगा, तुम्हारी इंस्टीट्यूशन तुम्हें फंड देगा। तुम्हें लगता है इंस्टीट्यूशन फंड नहीं देता है, लेकिन हर महीने 8,000 करके तुम्हें स्टाइपेंड देता है, वो भी एक फंड ही है। तो फिर उसके पीछे बहुत सारे पैसा, तुम्हारे टीचर की बहुत बहुत कुछ इन्वॉल्व है। तो फिर उसका ऐसे मत सोचो कि करना जरूरी है। क्यों? क्या आएगा उससे करने से, क्या मिलेगा? वो जो मिलेगा किसको मिलेगा? सोसाइटी को मिलेगा, कंपनीज को मिलेगा, किसको क्या मिलेगा?
तो इसको पहले ड्राफ्ट, अगर उस चीज में तुम्हें ज्यादा पॉजिटिव्स मिलता है, then you understand perhaps this is the thing which I should look at in a depth. वही होता है आइडिया को सिलेक्ट करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए इन रिसर्च. That's why I have mentioned here in introduction. Is it? Can you hear me now? Can you hear me? Yes. Okay. Fine. Right. So remember, asking question to a particular phenomenon is not disobedience. Asking questions to a particular healthy person who wants to advance the knowledge, advance the domain. So इसलिए सवाल पूछो, WH सवाल सबसे ज्यादा पूछो, लेकिन कैसे पूछोगे वो अलग बात है, उसको ध्यान में रखो, क्योंकि पूछने के लिए तू तरफ भी होता है, पूछने के लिए सारा भी होता है. कैसे पूछोगे वो अलग बात है, उससे लोग डिटरमाइन करता है कि तुम कैसे हो, वो अलग चीजें, हम लोग उसमें नहीं जाते. दैट इज द पर्सनालिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स. बट एनी गुड साइंटिफिक रिगोर, any person who is dealing with science or want to enjoy live science, they ask the question, they ask WH questions: why, what, when, where, why not. They ask this, and you should ask this. Make this a habit. So that's why, remember this, for any research or any study, anything in that way, anything, any mankind, civilization, everything depends on these questions only. जो सोसाइटी ज्यादा सवाल पूछता है वो सोसाइटी ज्यादा तरक्की करता है. वही सबसे बड़ी वजह है अमेरिका क्यों इतना तरक्की कर चुका है, हम लोग क्यों धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ज्यादा सवाल नहीं पूछता. सवाल पूछो, पोलाइट वे में पूछो, लेकिन जितना पूछोगे उतना जवाब मिलेगा, जितना जवाब मिलेगा उतना तरक्की होगी. दैट इज द सिस्टमेटिक इशू. एवरीथिंग शुड बी आंसरेबल. वो चाहे तुम्हारे सिस्टम क्यों ना हो, वो चाहे तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी क्यों ना हो, वो चाहे तुम्हारे टीचर क्यों ना हो, वो चाहे तुम्हारे स्कूल क्यों ना हो, कोई भी हो, सवाल पूछो, लेकिन अदब से पूछो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन सवाल पूछो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो the first thing is introduction, and these are basically the part in any introduction of your research article. जब भी तुम अपनी, तुम्हें फाइंडिंग कुछ मिला होगा या कुछ सोच रहे हो, लेकिन जब भी उसको तुम आर्टिकुलेट करोगे पहले ध्यान में रखना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होता है कि यू आर टेलिंग अ स्टोरी टू समवन. अब साइंस के जो स्टडीज आते हैं या टेक्नोलॉजी के जो स्टडी आता है वो मास में ज्यादा क्यों पॉपुलर नहीं होता, क्योंकि
मास को लगता है कि ये टेक्नोलॉजी के मैं क्या करूंगा, क्या क्या वर्ड लिख देता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, a good academic writer communicates their finding of technology also in such a way that a person who does not have any contact with technology, they can also able to understand हाँ उसने क्या कहा। सर कैसे होगा वो शायद उसको मालूम नहीं है, लेकिन क्या कहा वो उसको मालूम है, वो समझ गया। वो होता है राइटिंग स्किल। और हमारे जो साइड होता है इंडिया लेकर बाकी साइड में ये देखा गया है कि राइटिंग स्किल इज वन ऑफ द बिग रीजन व्हाई वी फेल टू क्रैक इन टॉप क्वालिटी जर्नल्स। वो लोग जिस टाइप के आर्टिकुलेशन डिमांड करते हैं, जिस टाइप के राइटिंग स्टाइल को डिमांड करते हैं, हम शायद वो अच्छे से मीट नहीं कर पाते। तो हो जाएगा, कोशिश करने से हो जाता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हो जाता है। सो द थिंग इज इंट्रोडक्शन, गो फॉर ऑल दिस थिंग्स इन इंट्रोडक्शन। द सेकंड पार्ट इज लिटरेचर रिव्यू। Now I have just mentioned two things, theory and empirics. Remember, जब भी तुम कोई प्रॉब्लम को डिटरमाइन कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, वो चाहे साइंस हो या कोई भी एरियाज में हो, एक चीज ध्यान में रखना, उसके पीछे कोई ना कोई तो थियोरेटिकल अंडरग्राउंड होगा, बैकअप होगा। जैसे एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूं। अगर मैं किसी ने मुझे चाटा मार दिया, इफ somebody slaps me, hits me, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई तो स्टोरी रहा होगा। शायद मैंने उसको कभी ना कभी किसी ना किसी कुछ तो किया था, उसका जवाब ये आया है। तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल। अपने यहाँ पे स्टिमुलस एलिसिट्स रेस्पॉन्स, तो ये थ्योरी है। उसी हिसाब से तुम लोग अगर जाओगे इलेक्ट्रिकल साइंस में थेवेनिन थ्योरम है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लेकर वो फंडामेंटल्स का लेकर बात करता है, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज है। तो ये थ्योरीज जो होता है, वो थ्योरीज तुम्हारे यहाँ पे बेस क्रिएट करता है। तुम जो प्रॉब्लम को देख रहे हो, उस प्रॉब्लम को वो थ्योरी के पर्सपेक्टिव में तुम देख रहे हो। तो शायद इस थ्योरी से या 2 या 3 थ्योरी को इंटीग्रेट करके ये प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया जा सकता है। That's why giving a theoretical grounding for your research is very, very important. And whenever I am finding a problem which is available in the society in a particular issue, I believe this is one or two theories. These are one or two theories. By integrating this, I can find out some way to solve that problem and to come up with something, some outcomes. तो इसलिए कभी भी तुम अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ निकाल रहे हो, तो फिर डायरेक्टली तुम एकेडमिक लिटरेचर में चले जाओ और जाके देखो उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या थ्योरी या क्या क्या चीज काम में आ सकता है। दिस इज कॉल्ड योर थ्योरेटिकल फाउंडेशंस या थ्योरेटिकल लिंकिंग। और उसके बाद एम्पिरिक्स। एम्पिरिक मतलब एम्पिरिकल स्टडीज। एम्पिरिकल स्टडीज मतलब जो स्टडीज हुआ है उस डोमेन में, शायद उस डोमेन में कुछ स्टडी भी हुआ होगा, जो कुछ फाइंडिंग्स दिया होगा कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, मेटावर्स में लोग ऐसे बिहेव करता है, या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी जो हैंड होल्डिंग है, एआर डिवाइस अगर आंखों में लगाता है तो फिर उसके लिए जो इमर्सिव एक्सपीरियंस आता है, उससे अगर डिवाइस हाथ में रहता है तो फिर अच्छा एक्सपीरियंस आता है, तो भी हो सकता है। किसी ना किसी ने इस तरह की कुछ फाइंडिंग्स दिया होगा। तो you try to understand what are the empirics or empirical findings also available in the literature concerning this problem. अगर एग्जैक्ट मिलेगा तो फिर समझ लेना कि there are some issues on the originality of your problem. अगर एग्जैक्ट नहीं मिलता लेकिन सराउंडिंग मिल रहा है, मतलब you are on right tracks. तो ये सराउंडिंग्स में क्या क्या मिल रहा है एम्पिरिकल, और साथ में थ्योरी क्या है, दोनों को मिला के ट्राई टू क्रिएट योर ओन लॉजिक, योर ओन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, सो दैट यू कैन exemplify and explain the problem statement, maybe backed by your hypothesis, whatever you are going for. Fine. So this is on your literature. इसलिए हम कहते हैं बेस लिटरेचर, एक को हम कहते हैं बेस लिटरेचर और एक को हम कहते हैं एम्पिरिकल लिटरेचर। बेस मींस थियोरेटिकल बेस, based on which literature is grounded. इसलिए ध्यान में रखना, कोई भी अच्छा रिसर्च पेपर जो होता है
उसके लिटरेचर रिव्यू अगर तुम ध्यान से फॉलो करोगे कोई भी आर्टिकल्स का, कुछ कुछ देखोगे तुम बहुत पुराने लिटरेचर से जो तुम्हारी थियोरेटिकल बेस के लिए काम आता है, और कुछ होता है रिसेंट स्टडीज जो तुम्हारी एम्पिरिक्स के लिए काम आता है या एम्पिरिकल फाइंडिंग्स के लिए काम आता है। पर्टिकुलरली हमारे सोशल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल साइंस डायनामिक फील्ड, ये पर्सनालिटी परसेप्शन ये सब बदलते रहते हैं। तो फिर इसके लिए बहुत सारे रिसेंट फाइंडिंग दोगे और बहुत सारे पुराना थ्योरीज दोगे। जो थ्योरी एक वक्त में आया था तो अभी भी रिलेवेंट है, तो वो थ्योरी को हम बेस बनाते हैं और साथ ही साथ अभी क्या हो रहा है उसको हम एम्पिरिक्स बनाते हैं, और दोनों को मिलाकर अपना जो लिटरेचर है उसको हम फ्रेम करते हैं। तो फिर यहाँ तक तो हमारा पहला वाला चीज आ गया। फिर वी गो टू मेथोडोलॉजी। कैसे ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, that talks about the methodology. That is, in introduction, whatever we mentioned in how, that how is been resolved with methodology. Right? तो बहुत सारे तरीका हो सकता है, इसमें भी कहीं उसको materials and methods भी लिखा जाता है, कहीं it can be various ways of data collection which you can think about. So maybe you can think about your survey, experiment, qualitative, systematic literature review, bibliometric study, meta-analysis, mixed method design. What is required? As per that, you are designing your methodology and other things. I'm not detailing all these things here. And finally, the last section of your research paper or articulation is talking about the conclusion, where 4 important things are there. Discussing what you got, then what is the contribution of this in academics, what is the contribution of this to practice. When I'm using the term practice, I'm talking both business as well as society. And finally, how it can be further advanced, that is future direction. Now, remember here, for any good journal, this section and introduction section, first I must say, 50% of the reviewer's mind is determined whether the paper will be rejected or accepted in the introduction itself. तो रिव्यूअर इंट्रोडक्शन पढ़ के ही डिसाइड कर लेता है कि इस पेपर को रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद अगर उसने तय कर लिया कि रिजेक्ट करना है तो फिर वो अंदर सिर्फ कमियां या खामियां ढूंढता रहता है। अगर वो एक्सेप्ट रिजेक्ट कर लेता है कि नहीं उसको चांस देना है तो फिर वो अंदर क्या क्या पॉजिटिव है उसको ढूंढता रहता है। इसको हम कहते हैं मेंटल बायस फ्रेमिंग। हम लोगों के माइंड ऐसे बायस करके काम करता है कि पहले हम बायस हो जाते हैं कि उसको हाँ बोलना है कि ना बोलना है। अगर ना बोलना है तो फिर हम लोग हजारों प्रॉब्लम निकल कर आएंगे उसके लिए, ताकि उसको ना बोला जा सके और उस ना को एक लॉजिक दिया जा सके। इसलिए इंट्रोडक्शन होता है, दैट इज 50% डिटरमाइंस वेदर योर आर्टिकल विल बी एक्सेप्टेड इन अ गुड जर्नल और नॉट। उसको ध्यान, इसलिए मैंने बोला था लास्ट में लिखने के लिए। नाउ and second thing, another 30% or 40% comes from your conclusion, particularly discussion and contribution. इसलिए जब डिस्कशन फ्रेम करोगे तो फिर वो सर तुमने क्या तुम्हें मिला है फिर वो लिखना नहीं है, उसका मतलब क्या है, जो तुम्हें मिला उसको तुम्हारे पर्टिकुलर फील्ड में पहले तो तुम्हें इसको 3 स्टेज में डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेज में वो तुम्हारे फील्ड की बाकी जो स्टडी है कौन कौन से स्टडी से सिमिलर है, कौन कौन से स्टडी से डिफरेंट है और क्यों है, ये पहली चीज लिखना है डिस्कशन। सेकंड चीज लिखना है इसका मतलब तुम्हारी फील्ड के लिए क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन योर फील्ड इन ओवरऑल। और तीसरे में लिखना है कि उसके साथ ग्रेटर पेरिफेरा में रिश्ता क्या है। अगर तुम ऐसे अपने डिस्कशन को डिजाइन कर पाओगे, दिस इज गोइंग टू क्रिएट एन यूएसपी फॉर यू। और उसके बाद आ जाता है तुम्हारी कंट्रीब्यूशन, जिसमें हम थियोरेटिकल और मैनेजरियल या प्रैक्टिकल दोनों बोलते हैं। थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन में हम लिखते हैं कैसे ये फाइंडिंग्स अपने एकेडमिक डिस्कोर्स को फर्दर एनहांस करेगा। एकेडमिक्स में ये 3, 4, 5, 6 सवाल आया हुआ है या फिर नॉलेज मिला है हमें, मेरा वाला जो है उसको फर्दर रिफाइन करके हर नया एक दो चीज ऐड करने वाला है। दैट इज माय एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यही चीजों को वापस क्लासरूम में लिया जाएगा, लेकर वहां पे टीचर लोग इसको लेकर जो बाकी पीसीए, एमसीए या बीटेक एमटेक के स्टूडेंट्स है उनको यही चीज पढ़ाएगा, वो लोग उसको सीखेगा, फिर वो लोग उसको फर्दर एडवांस करेगा। इसलिए क्या तुमने नया दिया।
और फिर आ जाता है तुम्हारी सोसाइटल एज वेल एज प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशंस और मैनेजरियल कंट्रीब्यूशंस। ये जो फाइंडिंग्स मिला है उसको कैसे वर्केबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, या उससे सोसाइटी के लिए क्या क्या फायदा हो सकता है, वो तुम्हें क्लियर एंड स्पेसिफिक वे में, नॉट जनरलिस्टिक कमेंट्स, लिखना है। और फाइनली फ्यूचर में और किया जा सकता है और तुम्हारे लिमिटेशंस पे उसको भी हाईलाइट करना है। तो यही होता है लगभग एक स्ट्रक्चर। उसके बाद रेफरेंस जो तुमने इस्तेमाल किया वो है, तो वही होता है वो लगभग एक स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट। नाउ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। कब कोई भी सिर्फ आर्टिकल नहीं, कुछ भी तुम लिखो, ये चीज तुम हमेशा ध्यान में रखो। क्लैरिटी एंड कॉन्साइजनेस, क्लियरली बोलो जो बोलना है, कॉन्साइज वे में बोलो, कम भाषा में बोलो, सो दैट वर्ड अकॉर्डिंगली जितना कम इस्तेमाल कर पाओ उतना अच्छा है। स्ट्रेट लाइंस, वन लाइन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 to 15 वर्ड्स इन ए लाइन, क्योंकि उसके बाद लोग बोर हो जाता है। तो कॉन्साइज एंड क्लियरली कम्युनिकेट, वो एक गुड कम्युनिकेटर का एक लक्षण होता है। फिर कनेक्शन एंड स्टोरी टेलिंग, बैकवर्ड कनेक्शन, फॉरवर्ड कनेक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ के साथ सेकंड पैराग्राफ की एक कनेक्शन होनी चाहिए, बीच में कोई ड्रॉप ना हो कि वो पहले क्या बोल रहा था अचानक कहां पे आ गया, ऐसा कुछ ना हो। फर्स्ट पैराग्राफ जहां पे खत्म हुआ सेकंड पैराग्राफ वही से शुरू होगा, सेकंड पैराग्राफ जहां पे खत्म हुआ थर्ड पैराग्राफ वही से शुरू होगा। दिस कॉल्ड कनेक्शन एंड स्टोरी टेलिंग। जो तुम लिख रहे हो वहां पे वो एक स्टोरी होनी चाहिए, एक स्टोरी की तरह बोल रहे हो तुम, सब कुछ सब मिला रहे हो, इंट्रोडक्शन भी लिख रहे हो, मेथोडोलॉजी भी लिख रहे हो, लिटरेचर भी लिख रहे हो, डिस्कशन भी लिख रहे हो, लेकिन सब स्टोरी के हिसाब से बोल रहे हो ताकि लोग उसके साथ चिपके रहे। फिर नो लॉन्ग सेंटेंसेस, प्रॉपर साइटेशन प्रैक्टिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग नहीं करते। अगर एपीए फॉलो कर रहे हो, बॉडी में भी एपीए, रेफरेंस में भी एपीए, और दोनों के साथ दोनों लिंक होने चाहिए। आज एआई के जमाने में ऐसा हो गया कि लोगों को मालूम नहीं चलता, इस टाइप के साइटेशंस रेफरेंस दे देता है जो वास्तव में नहीं रहता, नहीं होता है। बहुत कुछ हो रहा है ऐसा। यूजिंग एआई टूल्स रेस्पॉन्सिबली, आजकल एआई बहुत इस्तेमाल होता है, वो चाहे जेमिनी हो, वो चाहे चैट जीपीटी हो, वो चाहे और बाकी जितना भी है जीनी हो, जो भी हो, बहुत सारे एआईस है। और एआई टूल्स is a very good tool. Believe me, no journal restrict you to use AI. You can use it. But how to use, that is the most important thing. आजकल तो लोग मतलब AI को बोलता है कि मेरे लिए एक इंट्रोडक्शन लिख दो, मेरे लिए वो एक लिटरेचर रिव्यू लिख दो, फिर उसको लाके वो छुपा देते हैं। That is not the way to use AI. Believe me. जैसे मैंने कुछ सवाल पूछा था, जैसे देखो मुझे ये एरिया मिला, ये एरिया शायद एक काम हो सकता है। एआई को पूछो, कैन दिस एरिया बी ए गुड एरिया टू कंडक्टिंग माय रिसर्च? व्हाई? एआई कुछ बोलेगा तुम्हें, फिर एआई जो बोलेगा वो चीजों को लेकर वापस तुम जर्नल सर्च में जाओ, जाके वहां पे सर्च करके देखो वहां पे क्या क्या पेपर आया है या क्या क्या पब्लिकेशन हुआ है। दिस इज कॉल्ड ए डायरेक्शन सेंट्रिक यूज ऑफ एआई। वही चीज तुम्हें करना है। AI is just like another data analysis technique. तुम लोग MATLAB यूज करते हो, तुम लोग SPSS यूज करते हो, SAS यूज करते हो, ये सब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स है। R यूज करते हो, Python करते हो, ये सब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स है। उसी हिसाब से AI भी एक सॉफ्टवेयर ही है। और बाकी सॉफ्टवेयर को जिस काम के लिए इस्तेमाल करते हो, AI को भी उसी के लिए करो। AI is not a भगवान और God who is going to write everything for you. AI is going to give you a direction, और उसको उसी हिसाब से इस्तेमाल करो। That is called ethical use. और more importantly, you should accept it in your article. मैंने AI टूल इस्तेमाल किया है, ये टूल इस्तेमाल किया है और इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है। And every good journal demands it. ऐसा मत सोचो कि मुझे लिखना नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। Journals are coming up with AI guidelines, how to use it and which way to do it. And then this is very, very vital. It speeds up everything and it creates more mature writing. In fact, because of the introduction of AI,
whatever articulation problem is evident in Indian subcontinent and the US or Western part because of English is not our mother language, that is also bridging. That is also bridging in a big way. ये जो ग्रामेटिकल या बाकी आर्टिकुलेशंस में जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें होने के चांसेस भी घट रहा है या की वजह से ग्रामरली वगैरह जितना भी आ रहा है उनकी वजह से, तो दैट इज अ गुड पार्ट. और उसको वैसे लोग, दैट्स व्हाई रिमेंबर एथिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रिसर्च जर्नी. और ये एथिक्स ऐसी चीज है कोई तुम्हें बोल के नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारी खुद के अंदर से आएगा. अगर कभी नहीं आएगा तो फिर शायद कभी भी तुम रिट्रैक्शन वॉच में जा सकते हो. So that may happen. So then using AI tools responsibly. Now common pitfall to avoid. लिखते वक्त क्या क्या avoid करना है तो भी ध्यान में रखना. Inadequate, poor, outdated literature in the literature review section. हम करते हैं. हम तो कुछ तो वजह होता है कि हम लोगों के पास रिसोर्स नहीं रहता. लेकिन बिलीव मी, आजकल त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छे रिसोर्सेस हैं. त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन लाइब्रेरी में जाओ, एक से बढ़कर एक रिसोर्स तुम्हें मिल जाएगा. दुख की बात यह है कि हमारे स्टूडेंट जो है वो उसका एक्सेस नहीं करता. वो चाहे मैनेजमेंट हो या आईटी हो या जो भी हो, हर कहीं में यही है, वो एक्सेस नहीं करता. लेकिन एक से बढ़कर एक रिसोर्स पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरीज में, स्पेशली ई लाइब्रेरीज में, हमें इस्तेमाल करनी चाहिए. देन नॉट एक्नॉलेजिंग रिलेटेड स्टडीज ऑफ द टारगेटेड जर्नल, ये एक बड़ी चीज है. उस जर्नल में भी शायद उस तक पे बहुत सारे आर्टिकल्स आया है जिसको तुम एडवांस कर रहे हो, लेकिन तुमने अपने रेफरेंस में उसको इस्तेमाल नहीं किया. उस अब रेफरेंस में उसका नाम दे देना एक बात होता है, और उसी को बेस बना के अपने जर्नी को एडवांस करना वो अलग बात होता है. व्हाट इज नॉट ऑडियो, ठीक है. सो उसको वो अलग बात होता है. तो फिर उसको बेस बना के अगर तुम अपने जर्नी को एडवांस करते हो, जर्नल विल बी मोर इंटरेस्टिंग. दैट्स व्हाई एक्नॉलेजिंग. देन poor methodological design then your poor contribution, जो मैंने बोला था discussion contribution, and absence of study justification. क्यों कर रहे हो? तो ये कुछ common pitfalls है जिसकी वजह से मेरा वाला ये वाला this is the thing where the problem is there. Now, this is just the part on preparing submission. जब तुम एक पेपर सबमिट करोगे तो फिर क्या क्या तुम्हें बनाना है. बट जर्नल में दिया हुआ है, लेकिन फिर मैंने वो क्या किया, कवर लेटर. स्विच हो गया. Okay, so cover letter is there, should be there. Title page should be there. Highlights should be there. Then your manuscript should be there. Tables, figures, and whatever materials that are required in web appendix. Yeah, web appendix. So that are required in your preparation, and everything should be submitted in a separate way in the journal. Fine. So this is regarding your writing for a good journal. What are the do's and what are the don'ts? I think it's already one. Yeah, it's already one. So I'm not extending further. I think the time is up to one, no? Up to one only, no? Okay, so I'm not extending further. If later any point of time I get some time, or I have the fortune to come once again, I will try to discuss on how to tackle with revision. Revision की वक्त में क्या होता है? I will try to tackle with that part. Fine. So any questions, any doubt or anything, anybody, you can ask me now. Any questions, anyone? You can ask me. I have also on the verge of completion. It's almost complete. इम्पैक्ट फैक्टर. इम्पैक्ट फैक्टर का सिंपल मतलब होता है, मानो 2020 में या 2000, अभी तो 24 है, 2022 में मैंने कोई आर्टिकल कोई जर्नल में पब्लिश किया, ठीक है. वो जर्नल
वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड, मे बी साइंस साइटेशन इंडेक्स में है, मे बी सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स 2022। तो 22 में वो वॉल्यूम या वो इशू आ गया मार्केट में, ऑनलाइन हुआ, उसके बाद मार्केट में आ गया। अब 22 से लेकर 24 तक 2 साल तक ये मार्केट में है, तो उसको कितना साइटेशन मिला, उसी हिसाब से जितने भी आया है उन सबको टोटल कितना साइटेशन मिला। तो टोटल साइटेशंस इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम इन 2 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन दैट, तो सब साल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक साल में मैंने टोटल 25 आर्टिकल पब्लिश किया उस जर्नल में, और इस 25 आर्टिकल अगले 2 साल में 300 साइटेशन उनको मिला, तो 300 डिवाइडेड बाय 25, क्लियर? उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। पहले जो था, पहले वो 3 साल था, अभी जस्ट हाल ही में उसको 2 साल कर दिया गया है, इसलिए बहुत सारे जर्नल्स की इम्पैक्ट फैक्टर में बहुत छलांग आया है, बहुत इंक्रीजेस हैपन, लॉट्स ऑफ इंक्रीजेस हैपन। So any other questions, anyone? Okay. So with this, I have completed my part on this writing as well as selecting journals. How to identify that a journal authenticity, that a journal is authenticity or it is predatory or not. Okay. So identifying predatory journals. There are some common ideas which you need to understand. Pehli cheez, very first thing, as I told, check for the journal editorial board. सबसे पहले चीज तो जर्नल का एक डेडिकेटेड वेबसाइट है कि नहीं है, अगर बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, डेडिकेटेड वेबसाइट है कि नहीं है, फिर डेडिकेटेड जर्नल की बोर्ड है कि नहीं है, स्पेसिफिक एडिटर इन चीफ, देन एसोसिएट एडिटर, देन से हु आर द अदर रिव्यूअर बोर्ड्स, सब कुछ क्लियरली डिलीवरेटली मेंशन है कि नहीं है, अगर है तो उन लोगों को उनका रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट से दिया गया है कि नहीं है, उसके बाद उस जो लोग है उन लोगों का नेचर कैसा है, कोई भी स्पेशलिस्ट या अच्छा जर्नल अगर होगा तो फिर वो एक ही जर्नल में ह्यूमैनिटीज, साइंस, आर्ट्स हर कहीं से लोग लाके नहीं डालेगा। Any good journals, if they are trying to go with, they can at best go with interdisciplinary relevance, maybe commerce management, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, वो 4-5 स्ट्रीम एक साथ हो सकता है उनमें, एडिटर में या एडिटर इन चीफ में या एल्स्टेट एडिटर में। लेकिन अगर उसी में ही बंगाली से, संस्कृत से, इंग्लिश से कोई आ गया तो फिर तुम्हें बहुत सारे डाउट देखना है, देयर माइट बी सम इश्यूज। देन नेम ऑफ द जर्नल, आजकल एक फैशन है इंटरनेशनल लिख देना ताकि सबको लगे इंटरनेशनल जर्नल है, तो वो लिख देता है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। तो दीस आर इश्यूज। ये पहली साइंस है जिसके थ्रू तुम निकाल सकते हो कि वो जर्नल प्रेडेटरी है कि नहीं है, नंबर 1। उसके बाद सेकंड चेक तुम देखोगे whether they are listed. I told you at the very beginning, whenever you are talking about impact factor or listing, just for impact factor check for Scopus and Web of Science, not anything else. बहुत सारी चीज लिख देता है, इंडेक्स कोपर्निकस वैल्यू, बहुत सारी चीज लिखता है, ये वैल्यू, वो वैल्यू, एनआईएस फैक्टर, एनआईएस रेटिंग, ये कुछ भी नहीं है, लोगों को उल्लू बनाने का तरीका है। तो फिर इसमें मत जाओ, मत करो। स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, सिंपल। नहीं है तो है। आजकल वेब ऑफ साइंस भी साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला जो होता है या इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स जो है उसके लिए भी इंपैक्ट फैक्टर देता है, ईएससीआई के लिए भी आजकल इंपैक्ट फैक्टर देता है। तो फिर डोंट गो विद अदर्स, उसमें रहो। ये दूसरी चेकअप पॉइंट है। थर्ड चेकअप पॉइंट होगा कि किस टाइप के पब्लिकेशंस वो जर्नल करता है। पिछले 3-4 इश्यूज या वॉल्यूम्स उठा लो, उसमें जो पेपर्स है उसमें थोड़ा सिमिलरिटी ढूंढ लो तो मालूम चल जाएगा।
अगर तुम देखते हो पर्टिकुलर डोमेन को फोकस करके वो लोग पब्लिश कर रहा है तो समझ लेना कि दे आर सीरियस ऑन ए पर्टिकुलर डोमेन एंड एडवांसिंग देम, वो भी एक चेक पॉइंट होता है। तो ये 3-4 चीजें जो सबसे पहले तुम्हें चेक करना है, और उसके बाद क्या वो जर्नल तुमसे स्टार्टिंग में ही पैसा मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पे नाउ विद इन 7 days गेट पब्लिश्ड। मत जाना, जरूरी नहीं है, पैसे की कीमत होता है, बहुत मेहनत करके उसको कमाए हो तो फिर उसको खर्चा मत करो उससे। So, but these are some of the points which you need to understand. You can think about whenever you are thinking for a creator journal also. Fine. Now, being a beginner, what should be the approach? Should we select the journal and then start writing, or vice versa? अब दो चीज हो सकता है, जर्नल सिलेक्ट करके लिखना वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग करता है, लेकिन मे बी बेटर इन द एडवांस स्टेज। अगर कुछ तुमने पब्लिश कर लिया, अच्छे अच्छे राइटिंग्स या कैसे वो स्ट्रक्चर होता है वो समझ में आ गया, then you can think about that. But initially I would say work on your idea, prepare a good manuscript, and after that try to match the keywords that are there in your manuscript with this category of journals where these keywords fits best, and then try to target them. That is the good way to proceed. Yeah. So I think there are no other questions in this chat box also. I think with this we can conclude. So thank you everybody. Thank you Alok sir. Thank you Shanivar sir. Thank you Jayanta sir for this opportunity. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Manish sir, for your valuable insights in how to prepare a particular journal for a journal. What are the factors that needs to be taken care of, and how to select a journal. Thank you, and I would like to thank you specially, being an HOD of a department. You find out your time for the sake of our students, scholars, and the participants. And it is my of course all the faculty fraterns delight that to announce that Dr. Manish Dash is listed amongst the India's top 3% marketing scholars as per AT Scientific Index 2025. So we are very much fortunate that we have you today, and we came to learn a lot from you. Now, on behalf of Department of Information Technology and ETTR family, we'd like to express one token of respect and love. I'd like to request Dr. Alok Roy, the coordinator of this program, to present the memento page. Thank you, sir, and thank you all for your patient listening. Just to announce that we have a little refreshment for all of you. So please take your refreshment, but it has not arrived yet. Within 5 minutes, it will be arriving. So be with us, be in this room. You take your refreshment and be in this room again within 2, because we'll start the next session at 2 p.m. and it will be in online mode. But all the students will be remain present in this room in physical mode only. Thank you.